Good morning, everyone. Today we will start with the chapter circle. Circle is a two-dimensional figure. Two-dimensional figure means I can plot it on a plane. Suppose I have a line. This line is two-dimensional. I have this circle. I can plot it on a paper, then it is a two-dimensional. If I will have a sphere, then I can't plot the sphere on two-dimensional. It is we can plot it on three-dimensional figure, on 3D, like sphere, cone. They are three-dimensional figures, but circle, parabola, hyperbola, they are two-dimensional figures because we just require two axes, x-axis and y-axis, to plot them. So a circle is the part of plane geometry. We have two types. We study two types of geometry. In first sem we study plane geometry, and in second sem we will study solid geometry. Solid geometry is for 3D figures and plane geometry is for 2D figures. So circle is a part of plane geometry because we can plot it into two dimension. So now come to the definition of circle. A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. So first of all, I plot a fixed point. Suppose this is a fixed point. Then what will be the definition of circle? How circle is formed? If from this fixed point I take a constant distance, suppose I am taking 5 centimeter. So this is 5 centimeter. So this 5 centimeter, I take that point. If I take all the points which are at 5 centimeter from that fixed point, suppose this is at 5 centimeter, this point is at 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter. In this way, all the points which are at 5 centimeter, then if I plot them, then I will get the equation of circle. So that the figure of structure is circle. So in this way I will get a circle. So that fixed point, this fixed point, we call it as center, and center is mostly represented by symbol C. And the constant distance, here I am taking 5 centimeter, it can be anything. So that constant distance is called radius, and mostly we write it by small r. So this was the definition of the circle, which it is a collection of points, all the points which are at a constant distance from that fixed point. Then that is the equation of the circle, that is the figure of the circle. Next are the basic terms, basic terminologies, basic definitions we use in the circle. So first one is the radius. Radius, you all know. First of all, you have to knowledge of center. So center is a fixed point. So if this is a circle, then the fixed point is the center, and radius is the distance from center to any point on circle. If I have this point on circle, so that distance is radius. If I have this point on circle, if I join a line from center to a point, then this is a radius, and we represent it by small r. Then is a diameter. Diameter is the double of the radius. If this is r and then I take r, so that distance is diameter, and diameter is represented by d. Radius is represented, center is represented by c, and radius is represented by r. So next one is the chord. Chord is the any line. If I have this circle, then chord is any line which starts from a circle and end at circle. सर्कल से एक पॉइंट लिया हमने, वहाँ से स्टार्ट हुए, और सर्कल पे कोई दूसरा पॉइंट लिया, वहाँ पे ख़त्म हो जाए. सो दैट लाइन विच इज़ जो हमने ज्वाइन किया है एक पॉइंट से हमने दूसरे पॉइंट तक. सो दिस इज़ ए chord. इसी तरह से suppose if I have this line and I have this point and I have this point on a circle, if I join these 2 points, then it is a chord. So these are chords. So you can also say diameter is a chord. So diameter भी तो वही condition satisfy कर रहा है. Diameter जो है वो center से निकलती हुई एक just line है. So diameter is also a chord. Also we can say that it is the maximum length chord.
So this is the it is a chord whose length is maximum. It is also chord whose length is maximum. So next, move to other definitions. So next one is the segment and sector and arc. Suppose this is a circle, then if I plot a chord, this chord will divide the circle into two parts, and these two parts are called the segments. So this portion is the segment, and also I can say this is the segment. So जो कॉर्ड है सर्कल को जब डिवाइड कर देती है तो हमारे पास जो पोर्शंस आते हैं, जो दो पोर्शंस बन जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं सेगमेंट. नेक्स्ट इज सेक्टर. फॉर सेक्टर, if I take two radius, this is a center, so take one radius and take other radius, suppose this one. So if I take two radius, then this portion, this is called sector, or we can say this portion, this is a sector. This is a sector cut by two radius. दिस इज़ अ माइनर सेक्टर एंड दिस वन इज़ अ मेजर सेक्टर. जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है दैट इज़ द माइनर सेक्टर, और जो हमारे पास कम एरिया कवर कर रहा है दैट पार्ट इज़ द जो कम एरिया कवर कर रहा है दैट इज़ द माइनर, एंड जो ज़्यादा कवर कर रहा है दैट विल बी द मेजर सेक्टर. एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेक्टर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ आर्क. दिस पोर्शन, दिस कर्व, when we get this portion, then this curve, that curve is called arc. Suppose if this is PQ, then PQ, for arc we use this symbol PQ in the round form. That line is the arc. So this PQ is the minor arc. Similarly this one, this, if I go through this, then this PQ is the major arc. So these are the basic terms used in circle in the when we define circle. Now move to the equations. What is equation of a circle? So general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So if you are given an equation, then you have to tell whether it is a circle or not, because जब हम प्लेन ज्योमेट्री करेंगे तो हमने सर्कल भी करना है, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी फिगर्स करनी है. तो फिगर से देखने में ही हमें कैसे एक इक्वेशन दे दी, इसको देखने से कैसे पता चलेगा कि इट इज़ अ सर्कल और पैराबोला और हाइपरबोला और या फिर 3 डायमेंशन की फिगर है. बिकॉज क्वेश्चन जो है वहाँ पे मे बी मेंशन ना हो कि किस टाइप का क्वेश्चन है. आपको पता होना चाहिए अटैम्प्ट करने से पहले कि ये कौन से चैप्टर कवर कर रहा है. सो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है. अगर कोई इक्वेशन इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है देन इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ सर्कल. फर्स्ट कंडीशन इज which I have written at 3 point. Third point, only 2 variables should allowed. We can have only 2 variables like x and y or x and z. In this equation I used x and y here. Also someone can use x and z in replace y can be replaced by z, but at one time there should be only 2 variables. 2 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए. एक्स वाई जेड तीनों की एक साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है दे शुड बी सेम. इट डजेंट मीन दे शुड बी 1, कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन दोनों सेम होने चाहिए. इफ़ देयर इज़ 5 एंड देयर इज़ 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर नॉट सेम, देन इट विल, तो मैं इक्वेशन को डायरेक्ट देख के बता सकती हूँ इट इज़ नॉट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज नो मिक्स टर्म. सो थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि यहाँ पे कोई मिक्स टर्म नहीं होनी चाहिए. मिक्स टर्म मीन्स एक्स इंटू वाई टाइप टर्म्स. मेरे पास इक्वेशन में 5 इंटू एक्स इंटू वाई नहीं होना चाहिए. इस टाइप के जो टर्म्स है a इंटू एक्स इंटू वाई, इस टाइप के टर्म्स जो हैं वो इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. अगर कोई भी इक्वेशन इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है देन इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल हेयर. Suppose I have equation 5x square plus x plus 2 equal to 0 plus y, suppose. Then it is not a circle. Why? Because here coefficient of x square is 5 and coefficient of y square is
0, वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है वो मिस है, तो इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. सो दिस इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ सर्कल. सिमिलरली इफ आई विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5, then it is also not a circle, because there are three terms. We have x square, y square, z square, so it will form three dimensional figure. If there is some condition of some plane, then it can form a circle, which we will discuss later when we study more chapters, but individually this term cannot be a circle. So this is the basic definition and equation of the circle. In the next video we will discuss the various forms of equations of circle.